are still coming in? So there has been master classes, panel discussions, and in conversation have been programmed in the festival, and more than 25 of them will be held, and of course by eminent luminaries, international luminaries. They'll be taking master classes. There'll be panel discussions by film experts, film professionals in that area on the topics which are of interest to young filmmakers, which are very pertinent in the cinema of today. So that is the kind of curation which has been done, and a lot of inputs have come from festival director. So that is how this has been scaled up. Next, And please. for the women and the women voices in the Indian cinema, our master classes are starting with the discussion on them, how to make a cinema as a safe work environment for the Indian women. Creative Minds of Tomorrow, which has been now scaled to 100 filmmakers. It will have a 48 hours filmmaking challenge. So these 100 filmmakers will be divided into 5 teams of 13 different trades. So each team will be capable of making a film on their own, and there'll be a competition of 48 for making the film in 48 hours of about 6 to 7 minutes. And then after that, another thing which has been integrated is the talent camp, a recruitment talent camp is being organized in support, in collaboration with leading film industry companies who will come there, and they have already been given the resumes for not just these 100 but also the 3 edition 75 creative minds, and they are shortlisting, and they will recruit some of the creative minds from here itself. And then there'll be also master classes on different topics before they start sort of making the. Next, please. On the sidelines of IFFI, this film bazaar is held. It's in its 18th edition, and as the IFFI stands for the celebration of cinema internationally, Film Bazaar is for the business of cinema. And this year, very important integration which Film Bazaar has done is Mr. Jerome Pillard, who was the Cannes market director for several years. More than 20 years he's been the Cannes film market director, and he has agreed and he has come on board in a big way of curating the Film Bazaar. So this year entire Film Bazaar is sort of getting curated by some eminent expert who has shaped the Cannes market for so many years. So, and it is also one of the largest till now which has been held, and we have curated more than 350 film projects in this. So there has been an addition in the various verticals which are there. So apart from just the feature films, this time acknowledging that the series are an important part of content which are being absorbed by the young, absorbed by the audiences. So series has been included in the co-production market. It has been included in the screenwriters lab and the viewing room also. Next. So this is the Film Bazaar Promenade, which hosts the various country pavilions, state pavilions, and there'll be a VFX and Netflix, Sony. All of them are participating there to make the young filmmakers and also the filmmakers who participate in Film Bazaar abreast with the latest technologies available for filmmaking. Then there'll be Market Pavilion, wherein from internationally and even the important producers and all of them will be a part of this, who will put up their stall to let people find out about them. So these are the representative pictures of this thing. And then the Fiesta will be held in the Kala Academy grounds, the DP grounds, which will not just have the exhibition about the 4 centennials. It will also have an exhibition about the journey of Indian cinema, as to let the people who travel internationally find out about the heritage of Indian cinema. Then there'll be performances in the evening, live performances and food, which will be curated and powered by District by Zomato. And there'll also be a carnival held on the journey of Indian cinema on the Festival Mile on the 22nd November. Next. Last but not the least, the IFFI 55 promises that
this year will be the most accessible IFFI, with not just the accessible film section, wherein 6 films which are specifically for visually impaired and hard of hearing, but there will also be a bouquet of films, regular film shows, which will be enabled through a mobile app, wherein the hard of hearing can, where the visually impaired can engage with the film and see it with audio description. So, and then the accessibility partner Swayam, which is a pioneering organization in terms of inclusivity and accessibility. It is partnering with ESG and NFTC to not just make the physical venues accessible, but also making sure that all the festival volunteers and the officials, they are also sensitized towards the needs of accessibility and inclusivity by the people attending it. The opening ceremonies, the closing, the master classes, the press conferences also will be made accessible by Indian Sign Language interpretation being done simultaneously live with that event happening. Thank you so much. That is all from my side. धन्यवाद प्रफुल्ल, खूबसूरत प्रेजेंटेशन के लिए जो बहुत ही जानकारीपूर्ण था. नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन from the media side. So, and you can ask question from any of the panelists here. You are requested to introduce yourself before and your organization before asking the question. So, should I start with 270? Good afternoon, everyone. I'm Parvinder Sandhu from The Statesman. My question is to Shekhar, sir. So first of all, a big fan of your work. Given an opportunity to re-release one of your films, because your films were always deemed to be ahead of their times. So if you are given an opportunity to re-release it, which film would it be and why? Sorry, what was that question again? Sir, if given an opportunity to re-release one of your films, which one would it be and why? I would re-release Masoom. I'll tell you why. Because it was my first film. I had never directed a film before. I had never learned filmmaking. I was never anybody's assistant. I was a chartered accountant. So I really want to know how I made that film. I have no idea. And that to me has taught me the greatest lesson of filmmaking. To not know is the greatest 3 words of creativity. I don't know. And therefore you go on a journey to find out. That's what you do. But aapko main bataun ki it took me 12 years to actually get that film made. Right? But I really need to look at that film again and say, who was I then? I was innocent, I was naive, I was not knowing, and I just went. Prasoon's been a friend of mine for so long, he knows what I was going through. But क्या मालूम क्या होता है सर? अब ये इतना बड़ा फेस्टिवल ये कर रहे हैं, मैं I'm looking at all that, said ये कैसे करोगे तुम? But it's a huge thing what you just presented. It will be amazing pulling that off. Answers your question. Yeah. Thank you. Thank you. 95. Sir, my Yes, it is okay. see, I'm Saroj Ganpat from Dinamani. My questions to Minister. This is the continuance of the film festival in Goa. Continue of the film festival in Goa. So my question is, it's maybe other. You say that the BJP chief minister willing to conduct the in Goa festival. Whether it's other state chief minister not willing, my question. Second things, there will be in the film industry, there will be 2 sections of the is there. One is stars are earning more, much more earning. Another section, people, the newcomers, the new artists, newcomers, they are all very poor conditions. So the Goa like place is a very highly richest place. I'm seeing the continuous of that these poor people and newcomers not able to come to the Goa. Whether it's a considering going to the government to any other places. Another thing, many legend peoples are now no more. So there is a film industry that is going to very big welcome. So you should encourage the
many newcomers. So the festival they are not able to attend in the Goa festivals. See your two questions. One is second question you are asking the. That's why we are giving new 100 young people's opportunity here. So the new minds, they are coming, they are exhibiting, we are giving opportunity to them for exhibiting them talent. The first question is that while that time discussion were there, so the Goa Chief Minister came forward, and he, last year also the same question you asked, I remember. Then Anurag ji given answer to you. So this see like so the same place the festival is happening. So like we are also established a permanent setup, and the one destination, the festival means International Film Festival means it is in Goa. So for that the festival is happening. And other, if you are telling, that's why we conducted the road shows also to participate in Chennai or Mumbai and Hyderabad. We are conducting the road show. We are giving the facilities. We are calling for the talents also. Yeah. And we are going to conduct in waves a big, first time like such a summit in Delhi on February 5th to 9th. Thank you. 16. But he's saying that I have not asked that question last year. सर आई एम कोमल शर्मा फ्रॉम भारत एक्सप्रेस मेरा पहला सवाल ये है कि Moni Sharma from Bharat Express. कोमल शर्मा कोमल, भारत okay. एक्सप्रेस मेरा पहला सवाल ये है कि जो लोकेशन को लेकर के है, लोकेशन इस बार क्या बहुत खास है और अलग है? जो सुना गया कि किसी फ्लोटिंग यार्ड जो है उस पे इंटरेक्शंस और पैनल डिस्कशन होंगे. जी वो भी एक नया है जो इस बार होने वाला है, और उसको आई थिंक इंडियन मोशन पिक्चर एसोसिएशन करने वाली है, तो वो भी एक इस बार कुछ नया होने वाला है. मेरा सर दूसरा सवाल प्रसून जी से है. प्रसून जी, जिस तरीके से इस तरीके के बड़े फेस्टिवल्स अब हम कर रहे हैं, तो इसमें वो वाले यंग डायरेक्टर जो होंगे, जो जिनके पास कैमरा नहीं है अब क्योंकि मोबाइल बहुत एक्स्ट्रा एडवांस हो गए हैं, उनके लिए कितने स्कोप आने वाले वक्त में और इस बार खुलेंगे? जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि ये इस फेस्टिवल में हम लगातार ये प्रयास करते रहे हैं कि जो यंग माइंड्स हैं, यंग जिनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, जो पहली बार फिल्म बनाना चाह रहे हैं, और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी के पास भी ऐसा नहीं है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से फिल्म नहीं बना सकते, और वो फिल्म आप यंग क्रिएटिव माइंड्स की जब हम बात करते हैं वहाँ इंटर कर सकते हैं. तो शेखर इस समय भी आकर कहते हैं कि आई डोंट नो, मतलब तो आपको समझ में आना चाहिए कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. लेकिन कोई भी छोटे से छोटी जगह में, आपने तो इंस्टाग्राम में देखा होगा और रील्स में और यूट्यूब में, कि आज मंचों का अभाव नहीं है, और लोगों के पास ऐसा नहीं है कि ये इतना एनिग्मा जो फिल्म मेकिंग और लोगों के बीच जो स्टोरी टेलिंग के बीच जो एक रहस्य सा आ गया था ना, वो हटने की कोशिश, और उसके लिए प्रयास हो रहे हैं कि वो दूरियां कम हो, चाहे वो मास्टर्स क्लासेस के थ्रू हो, चाहे सेशंस के थ्रू हो. लोगों को जो है कहानी कहने में इतनी कठिनाई और इतनी तकलीफ नहीं हो कि वो एक बड़ा रहस्यवादिता है उसमें, कोई मैं तो पहुंच ही नहीं सकता वहां तक. वो टेक्नोलॉजी वो दूरी कम कर रही है, और ये फेस्टिवल भी वो दूरी कम करने का प्रयास. एंड जस्ट टू ऐड, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इंडिपेंडेंस डे के अपने उद्बोधन में डिज़ाइन इन इंडिया और क्रिएटर्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट विजन दिए थे और दिशा निर्देश दिए थे. उसके बाद से ही आप देखें तो क्रिएटर्स इकोनॉमी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स में दो इम्पॉर्टेंट पहल हुई हैं. क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का सीजन 1 लॉन्च हुआ है. इसमें एक्चुअल में हमने तो 25 चैलेंज शुरू में लॉन्च किए थे, वी थॉट 2025 में शोकेस हो रहे हैं, बट इतना ज़्यादा उसमें उत्साह आया है कि नाउ वी हैव 5 more challenges which have been added to that list. So लगभग 30 चैलेंज अब हमारे पास जारी हैं, हर फील्ड से हैं. वो क्रिएटर्स की पूरी दुनिया से रिलेटेड चैलेंजेस हैं. वो चाहे एनिमेशन हो, चाहे रील मेकिंग हो, चाहे म्यूज़िक बनाना हो, चाहे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम करना हो,
या कुछ रेडियो से रिलेटेड काम करना हो, या फिल्म का पोस्टर ही क्यों ना बनाना हो, इस किस्म के हर एरिया के सारे चैलेंजेस जो पूरी क्रिएटर इकोनॉमी आज बहुत इम्पोर्टेंट, ना केवल हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जुड़ी हुई है, पर हमारे देश में कंटेंट के क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे गांव कस्बे जहां से यंग फिल्म मेकर्स, चाहे वो फीचर फिल्म नहीं बना रहे हैं पर छोटी छोटी रील्स बना रहे हैं, फिल्म्स बना रहे हैं, और इतना इंटरेस्टिंग और इतना क्रिएटिव तरीके से बना रहे हैं, तो इन सभी लोगों तक पहुंचने के लिए जो ये क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 लॉन्च हुआ है, और यहीं से हम आप सभी को हमने बताया था उसके बारे में जब हमने लॉन्च किया था, हमें उम्मीद नहीं थी कि उसका रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग होगा। आज कम से कम 10 से 20 लाख लोगों को हमने इसमें रीच आउट तो किया है। रजिस्ट्रेशंस आज की तारीख में लगभग 10-12 हज़ार हैं। उसमें से विनर्स हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, यही इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी राइट नाउ, बट इट्स अ वेरी हैप्पी प्रॉब्लम, एंड होपफुली जब तक वेव्स होगा तब तक ये नंबर और बढ़ने वाला है। और क्रिएटर्स इकोनॉमी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ हमारी देश की इकोनॉमी और हमारी एम्प्लॉयमेंट से भी जुड़ी हुई बहुत बड़ी ये व्यवस्था है। तो इसको भी आप इसी के साथ अगर लिंक अप करेंगे तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड द डायरेक्शन दैट वी आर हेडेड टुवर्ड्स, व्हिच इज फ्यूचर इज नाउ। सर कितने लोग मेरे पास आते हैं, सर हम डायरेक्टर कैसे बने, और सामने मेरे उनके वो वीडियो ले रहे होते हैं मेरा एक सेल फोन के साथ, तो मैं कहता हूँ आप तो वीडियो ले रहे हो, मैंने कहा हाँ, आपके पास एडिटिंग फैसिलिटी होगी आपके वीडियो में कहीं, हाँ आप यूट्यूब में भी डाल सकते हो, मैंने कहा आप तो बन गए डायरेक्टर, आप शूट भी कर रहे हो, एडिट भी कर रहे हो, यूट्यूब पर भी डाल रहे हो, आपका सवाल क्या है? अक्सर का सवाल ये नहीं होता कि हम डायरेक्टर कैसे बने, हम सर फेमस डायरेक्टर कैसे बने, ये सवाल होता है। अब उसका जवाब कोई है नहीं मेरे पास। उसका जवाब है कि अगर इफ़ योर सबकॉन्शियस somehow relates to the subconscious of the audience's subconscious, then you'll be famous. But fame is not the only thing for creativity, right? So the creative economy hai, everybody can be creative, and some people will be world beaters, some will just be creative, right? 271. Thank you so much. This is Ashwini Kumar from News 24 E24. I'm happy, sir, to see you, Shekhar sir, कि ये इस बार सिनेमा के लोग इफी को सिनेमा के चाहने वालों तक पहुंचा रहे हैं। एंड प्रतुल दिस टाइम वो मुंबई गए और सारे के सारे मेन एंटरटेनमेंट मीडिया के लोगों से वो मिले, उनको इनवाइट किया। हैव सीन दैट। सर मेरा सवाल ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इफी जो है वो इंडियन प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनली हम अपनी फिल्मों को दिखा सकें, बड़ी बाहर की इंटरनेशनल फिल्मों को, और इंटरनेशनल बायर्स को यहाँ ला सकें हम। इसके तौर पर अभी तक हम कोशिश बहुत करते रहे हैं, और हम अभी भी सुनते रहे हैं कि हम कान से बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या एग्जैक्टली कहीं हम लैग कर रहे हैं, हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, या हमारे पास इंटरनेशनल जो मीडिया है हमारी फिल्मों को देखने के लिए, जो यहाँ आने वाली या इंटरनेशनल बायर्स है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं? कहीं तो है कुछ कम। सर ये सवाल तो मेरे ख्याल सेक्रेटरी साहब ने जवाब दिया है, लेकिन दोबारा दे देंगे। लेकिन ज़िंदगी में कोशिश के अलावा कुछ होता ही नहीं, कोशिश ही करते हैं ना हम। अगर इतने साल कोशिश की और हम इंटरनेशनल नहीं बने, वो सवाल ऐसा, मेरा ये सवाल है कि सिर्फ क्या इंडियन फिल्म को इंटरनेशनल बनाना है कि अपने आप को सेलिब्रेट करना है? हम क्या ऐसी अच्छी फिल्में नहीं बनाते जो दुनिया सेलिब्रेट करे? फिल्म फेस्टिवल इसलिए भी तो होना चाहिए कि लोग हमारी फिल्में आकर देखें ये कैसा देश है, यहाँ के स्टोरी टेलर्स कैसे स्टोरी टेलर्स हैं कि इतनी सब दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने बना दी। लेकिन हमारा कल्चर अलग है। हमने वो जो जिसको कहते हैं रामलीला को बना दिया, हमने नौटंकी को लेकर फिल्में बना दी, हमने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। लेकिन बार बार मैं यही सुनता आ रहा हूँ, यार उनके जैसी फिल्में बनानी चाहिए। उनकी जैसी फिल्में क्यों बनाएं? उनको हमारी जैसी फिल्में क्यों ना बने? तो हमारा जो पूरा जो एफर्ट है इस बार कि भैया फिल्म बाजार में आओ, हम आपसे सीखें, लेकिन आप भी तो हमसे सीखो। हमने भी कुछ बनाया है। तो आई नो दिस इज साउंडिंग पेट्रियोटिक, लेकिन ऐसा बहुत बड़ी फीलिंग है। इसमें एक छोटा सा, इससे रिलेटेड एग्जांपल नहीं है, पर a slightly nuanced answer I can give. When the world calculates their GDP, they calculate the care that they take of their elderlies in their old age homes.
इट इज काउंटेड एज इकोनॉमी, क्योंकि है वो नंबर आता है वहाँ से, पर हमारे यहाँ पे वो नंबर हमारी जीडीपी में जुड़ा हुआ नहीं होता है. तो वी माइट थिंक कि हमारी जीडीपी कम है, बट यू अंडरस्टैंड वेयर दैट नंबर इज कमिंग फ्रॉम, दैट नंबर इज हैपनिंग समवेयर. तो हमारा कल्चर बहुत अलग है, हमारे दुनिया के रूल से हमारे, मैं इसलिए कभी वो उसमें नहीं, मैं लिस्ट में जब मैंने कहा था आपसे कि हम पहले नंबर पे हैं, 15वें नंबर पे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. हमारी फिल्में हमारे आज विश्व में जा रही हैं. इतने डाइवर्स देश की, इतनी डाइवर्स भाषाओं की बनी फिल्में, एक तो पहली बात है कि हमारा देश का मार्केट ही खुद इतना बड़ा है, पर हमारी फिल्में भी बाहर जा रही हैं, बाहर की फिल्में यहाँ आ रही हैं, और हम किस कॉस्ट पे बनाते हैं, उस सब चीज़ों से हमें अपने वो नज़रिया हमें रखना पड़ेगा अपने फिल्म फेस्टिवल को ब्रांड करने के लिए. या इस फेस्टिवल में और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं. वी कैन नॉट से कि हमारा फेस्टिवल दुनिया का सबसे अच्छा फेस्टिवल है, तो विल कंटिन्यू टू डू व्हाट वी कैन, बट विल मेक इट डिफरेंट, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन. आज जितने कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स में आप पता कर लीजिए, दुनिया भर का एक चेक बॉक्स बना लीजिए, सारे फेस्टिवल लिख लीजिए, ये सारे कंपोनेंट्स के टिक मार्क कर दीजिए. आई थिंक हमारे एट्रीब्यूट्स में, मेरी अंडरस्टैंडिंग में आज की तारीख में हम हर जगह टिक मार्क्ड हैं, और देयर विल बी मेनी फेस्टिवल जहाँ पे वो टिक मार्क नहीं होंगे. आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इज विद ऑल ऑफ यू. हमें अपने बारे में आप बताइए, अब इसीलिए आप इतने आज यहाँ पर तादाद में आज आप बैठे हुए हैं. एक एक आपका आर्टिकल, एक एक आपकी रील, एक एक आपका वीडियो जो आज आप लोग पोस्ट करेंगे, या आर्टिकल लिखेंगे, या अपने ऑनलाइन मीडियम में लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे, इंटरनेशनल भाषा में लिखेंगे, आई थिंक ट्वीट करेंगे, सोशल मीडिया पे एम्पलीफाई करेंगे, हमारे इन्फ्लुएंसर्स बोलेंगे, तो आई थिंक अपने आप ये फेस्टिवल उस भाषा में भी नंबर 1 माना जाएगा, उस लैंग्वेज में भी नंबर 1 माना जाएगा. एक अब और हम, चीज एक और ला- चीज मैं आपके ऐड करूंगा. संजय जी ने जो कहा बहुत बहुत अ, देखिए, ये जो पुष्प वाटिका और दंगल में फर्क है. ये क्रिएटिव वर्ल्ड जो है ना, इसमें हर पुष्प को अपनी तरह से महकने का भी बनकर पुष्प वाटिका बनती है. दंगल में किसी को हराना पड़ता है. तो ये फेस्टिवलों के बीच की लड़ाई नहीं है. क्रिएटिविटी में एक क्रिएटिव प्रोडक्ट दूसरे से लड़ नहीं रहा है, ये दुनिया में को और सुंदर बनाने के लिए महक रहा है. सो देयर इज अ डिफरेंस देयर. व्हाट वी शुड लर्न, वी शुड नॉट टेक लाइटली, इज are we infrastructurally, in terms of our processes, in terms of the way we produce our festivals and organization and all, are we becoming better and or not? But conceptually, जैसा कि संजय जी ने और शेखर जी ने कहा कि किसी से स्पर्धा की आवश्यकता नहीं है. ये अपना एक फेस्टिवल है, इसका अपना एक कलर है, इसकी अपनी फिलॉसफी है, अपना एक उसका रोल है हमारे समाज में. आई थिंक दैट इज व्हाट नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड, एंड वो कोशिश, उसको बेहतर करने की कोशिश करें. थैंक यू सर. और आज का ये आखिरी प्रश्न मैं लूंगा, 39 नंबर, 39, इनके बाद 39. थैंक यू. अनिल हांडा, लोकतंत्र की शान. ग्रैंड इवेंट होगा, तो वो ग्रैंड इवेंट के लिए व्हाट आर द फिगर्स फॉर बजट एंड व्हाट इज द रेवेन्यू मॉडल? मे बी इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन. Yeah, I mean, if you really look at the budget of the event, obviously it will be huge because the budget is spent by us. Some money is spent by us. Some money is spent by government of Goa. Lot of money is spent by sponsors. Lot of money is spent by cinegoers. Don't forget, it's a इकोनॉमी में हमेशा जो कहते हैं ना, एक छोटे से काम का 6 गुना निकलता है. इट्स अ ह्यूज इकोनॉमिक एफर्ट ऑल्सो. आई थिंक इस पूरे फेस्टिवल का जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो it will definitely run in hundreds of crores, because a lot of people who are traveling from outside, a lot of people are traveling from all over. People are spending money on hotels, people are spending money on buying registrations, tickets. और अभी fiesta है, people will spend money on खाना, people will spend money on multiple things. So it's a huge enterprise. It's happening through the collaboration of multiple people, and that's what it is. I mean, एक तरफ तो हमारी शोकेस करना है फिल्मों को, लेकिन इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है जो हम अप्रिशिएट करते हैं, और दैट्स व्हाई वी आर थैंकिंग ऑल आवर सपोर्टर्स फॉर दिस इवेंट. अब मारवा सिटी, उनका मैंने देखा भी था वीडियो. और अभी एक्चुअली एक फिल्म आई है जो प्रभा मिश्रा ने बनाई है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के ऊपर,
मुरुमुरु जी के ऊपर। तो मैं पूछना चाह रही थी कि क्या वो ऐसी फिल्म जो है वो ईफी में दिखाने का प्लान है, और दूसरा कि बजट क्या है इस बारी का। और शेखर जी से एक सवाल है, शेखर जी आप यू आर वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म मेकर्स, तो आपका जो पानी का फिल्म का बहुत टाइम से सुन रही हूँ मैं, तो वो उसका कब रिलीज है या क्या अपडेट है? मेरा सवाल तो आसान है। कोशिश, हर सांस से कोशिश होती है, फिर सांस छूटती है, फिर एक सांस कोशिश होती है। पानी बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत इंटरनेशनल फिल्म है, उसके लिए फाइनेंसिंग चाहिए। और कहते हैं कि हर डायरेक्टर की ज़िंदगी में एक ऐसी फिल्म होती है जो कोशिश करते रहते फाइनली जाकर बन जाती है। तो मैं इस पानी फाइनल जाकर बन ही जाएगी। थैंक यू। Budget part I had already answered, right? Thank you very much. And now I request Brinda to make vote of Thank you, thanks. sir. I would Give like to vote of express my sincere gratitude to Sri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Minister of Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan ji, Honorable Minister of State of Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, and Sri Pramod Sawant ji, CM Goa, for their invaluable guidance and unwavering support. Their leadership has been instrumental in shaping up this event and setting the stage for the upcoming 55th edition of IFFI at Goa. My deepest acknowledgement to Sri Sanjay Jaju, Secretary of Information and Broadcasting, for his visionary ideas and steadfast encouragement, which have played a key role in achieving new milestones for the festival. A special note of appreciation to our festival director, Sri Shekhar Kapoor sir, whose exceptional vision and leadership have been at the heart of the festival's planning. I'm grateful to Sri Prasoon Joshi sir for his invaluable insights and his gracious presence today, and the members of the steering committee for all their guidance and support. I am thankful to Pratul Kumar, Joint Secretary and MD NFDC, for the wonderful insights on 55th IFFI, and team NFDC for all their efforts. Finally, I would like to acknowledge the journalist, media, and PIB for your active participation today, and also for amplifying the festival's reach. Thank you to all those who have made this curtain raiser event a resounding success. With great anticipation, we now look forward to the 55th edition of IFFI, which promises to be extraordinary and an unforgettable celebration of Indian movies. Thank you so much. Thank you, Brinda. And now I request everybody to just, because photographers want to take a photograph.